Okay, We are I on. think we are live now. Yeah. So, good morning, everyone. And we are today on Sunday, 26th February. And for the past, I think, 17, 18 sessions, we have every Sunday we have been reading bilingual translation. I mean, originally the work is in Hindi and we're trying to translate it in English. The book Vyavahaaraatmak, Janvaad by Shri A. Nagraj, and the book we are saying in English is Behavior Centered Conversations. So today we'll begin from page number 45. So let me go to the page directly. Okay, so where we ended last week was that सह अस्तित्ववादी नजरिया से यह स्पष्ट होता है सुखी होने के लिए समाधान अपरिहार्य है. It becomes clear from coexistential viewpoint that resolution is essential for happiness. And I think that this is a very fundamental concept of Madhyas Darshan. We all spent our lives before we came across Madhyas Darshan, before we tried to understand Madhyas Darshan, and we all always wanted to be happy, although we did not have this vocabulary or this language with us. Um, and we made all different, in different ways, we made our own attempts, try by trials and errors to become happy. Here, what Babaji is saying is that it becomes clear from Madhyas Darshan, from coexistential viewpoint, that resolution is essential for happiness. Wisdom, understanding is essential for happiness. सुखी होने के लिए समाधान अपरिहार्य है. अपरिहार्य मतलब अभी हम इसको कह रहे हैं essential. You cannot become happy or you cannot achieve continuous happiness in absence of resolution, in absence of wisdom, in absence of understanding. Okay. So one cannot be happy if one is unawakened, if one is under delusion, which I can very clearly see, at least for myself, and all of us, all of you can also try to evaluate your own condition, also your own situation, also that where we stood and where we stand now as far as resolution is concerned. So this I think very powerful sentence. The more we think about it, the more it becomes clear, and the more it becomes clear in context of this book, we can say that this can be brought in discussions also. The name of the book is Behavior Centered Conversations, and we repeatedly say that we all talk to our friends, to our family members, to our colleagues from morning to evening, 24 almost 24/7, except the time when we are sleeping. And can these kind of things be brought into discussions? Okay, we can review our content of discussion the way we have been doing so far or we did so far. And then in light of Madhyas Darshan, can our content of discussion, can we give some direction to it? So this is a very important thing which we can bring into our discussions. Although, Babaji is saying that at many places in this book, he emphasizes that this point can be brought into discussion, this point can be brought into discussions. Many times he may not be specifically saying that this point can be brought into discussion, but once we get a hang of it, it's easy for us to see that there are many more things which can bring into discussions. This point I think is one of them, that resolution is essential for happiness. If one is not wise, if one is not resolved, okay, one cannot be happy. So, in this background, this is the last sentence of our previous reading. If anyone has any questions until now, whatever we discussed so far, we can take them. If you have any sharing, please go ahead and do that. Otherwise, we'll proceed with from here. Okay.
So no comments. I guess we can proceed. So we are now on page number 45, last paragraph. सुख को मानव के धर्म के रूप में पहचाना गया है. मानव ज्ञानावस्था की इकाई होने के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है. ज्ञान ही विज्ञान और विवेक के रूप में सुस्पष्ट प्रमाणित होना पाया गया है. हैप्पीनेस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ह्यूमन धर्म. ओके, सुख को मानव के धर्म के रूप में पहचाना गया है. व्हाट वी आर सेइंग इज happiness has been recognized as human dharma. Humans belong to the knowledge order. This fact is the basis of this clarity. मानव ज्ञानावस्था की इकाई है, इस आधार पर यह स्पष्ट हो जाता. So humans belong to the knowledge order. This fact is the basis of this clarity. ज्ञान ही विज्ञान और विवेक के रूप में सुस्पष्ट प्रमाणित होना पाया गया है. Knowledge itself is evidenced in the form of science and wisdom. Okay, so it's based on science itself. It's based on knowledge itself, that what is to be done and how it is to be done, that becomes clear. So science is how it is to be done, how anything is to be done, and wisdom is what is to be done. Okay, so Babaji has repeatedly said, wisdom gives clarity of the goal. What is the goal? That becomes clear under wisdom. And how to achieve goal? What is the direction? What are the efforts we make? That comes under the domain of science. So once we have knowledge, then wisdom and science, they also become clear. They are evidence. विवेक की सार्थकता लक्ष्य को पहचानने के रूप में, विज्ञान की सार्थकता जीवन लक्ष्य मानव लक्ष्य के लिए दिशा और प्रक्रिया को स्पष्ट करने के रूप में और स्पष्ट होने के रूप में, साथ ही प्रमाणित होने के रूप में पहचाना गया है. दिस इज आई थिंक आई ऑलरेडी कवर्ड इट. मीनिंगफुलनेस ऑफ विजडम हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द गोल. व्हाट इज द गोल? That is in the domain of wisdom. That clarity comes from wisdom, while meaningfulness of science is in the form of clarifying and being clear. इसको लिखा है यहाँ पर, प्रक्रिया को स्पष्ट करने के रूप में और स्पष्ट होने के रूप में. So science is in the form of clarifying and being clear. When I'm saying it, if I write in here, in the form of clarifying and in being clear, it reads better. About the direction and process, as well as for evidencing the जीवन expectation and human expectation. तो यहाँ पर दो शब्द आए, जीवन लक्ष्य, मानव लक्ष्य. So जीवन लक्ष्य is I think expectation, लक्ष्य को तो गोल ही लिखना चाहिए. So we will say जीवन goal and human goal. So मानव लक्ष्य जो है वो है समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व. Okay, that is human goal. Human goal is resolution, prosperity, fearlessness, coexistence. And जीवन goal, जीवन लक्ष्य is सुख, शांति, संतोष, आनंद. Happiness, peace, contentment, and bliss. So this is the जीवन goal. So जीवन goal and human goal, इसको हम थोड़ा सा अपने में ध्यान रखेंगे. मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य, इसे हर व्यक्ति पहचान सकता है, प्रमाणित हो सकता है. Everyone can recognize this and can evidence this. इसके लिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा प्रस्तुत है. Consciousness development value education has been presented for this. When I read it every time, this Chetna Vikas Mulya Shiksha, which we are saying is consciousness development value education, this phrase also, I find it very interesting. We all have heard about value education or Mulya Shiksha in general context. And what is value education? I have always heard, and I myself have remained confused about what exactly is
value education. Person should become good, his character should be good, his deeds should be good, he should not exploit others. These kind of things we keep hearing in value education, but precisely what is value education and how to impart it, that clarity, like I at least personally did not have earlier. So Babaji is saying is Mulya Shiksha can be achieved, value education can be achieved by consciousness development. So Chetana Vikas Mulya Shiksha, Babaji uses this phrase repeatedly. Okay, consciousness development value education. So actually value education can be achieved only with the help of consciousness development. Okay, this is the essence here. This is the crux. So a human being is not only the body. Okay, a human is combined form of body and jivan. It is in the jivan that consciousness is there, and that consciousness is what needs to be developed. Okay, so when we do Jivan Kriya or activities in the Jivan, we see that from 4.5 activities to 10 activities. That is what we have to achieve for awakening. That is where we have to reach. So that is the process of consciousness development. So the first step is we have to realize, every human has to realize that he or she is not only body. Okay. This also can be brought up in the day-to-day conversations, which I have attempted in my family, and I'm sure you also, not only in my family, but wherever I get opportunity with my friends also, in some lighter way, depending on the interest of the other person also, we get some leeway, we get some opportunities where we can bring up these discussions. So consciousness development is how value education can be imparted. So first we need to be clear that there is consciousness, which we are saying is Jivan. Okay? And then development can be done in that. And Babaji has shown the clear path about that. And that is how value education we can achieve. So consciousness development value education is another very interesting and powerful phrase which I see in Madhyas Darshan. चेतना विकास मूल्य शिक्षा. ठीक है, अगले पैराग्राफ पे जाएंगे, पेज 46 पे. एनीथिंग हियर, एनीवन हैज टू से एनीथिंग? लेट मी सी हाउ मेनी फ्रेंड्स आर हियर. सब में मनोज भाई, भुवन भाई, दिव्य, हितेश जी, प्रभा जी, शैलेंद्र राठौर, स्पेंसर, विपुल. ओके, गुड, वेलकम एवरीवन. सो वी विल प्रोसीड. अभी तक किसी को कुछ कहना हो तो बताएं. एनी कमेंट्स? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सदा से मानव सुखी होने के लिए इच्छुक प्रयत्नशील रहा ही है. यत्न प्रयत्नों में सोचने समझने की आकांक्षा समाहित रही है. Humans have always been naturally desirous of and making efforts for becoming happy. In all those efforts, thinking and aspiration for understanding is naturally included. यत्न प्रयत्नों में सोचने समझने की आकांक्षा समाहित रही ही है. In all those efforts, desire, thinking and aspiration for understanding is naturally included. साथ में इनके फल परिणामों को आंकलित करते आया है. Along with these, humans have also been doing assessment of results of these efforts. Okay, so they make their efforts and then they review based on the results whether they achieved what they wanted to achieve through those efforts or not. ये सभी प्रक्रियाएं मानव के सुखधर्मी होने के प्रमाण में गण्य है. All these activities are the acceptable evidence of happiness being the dharma of humans. So the humans have been doing all these things. They are making efforts, they are doing their evaluation. So all this is evidence that humans are trying to achieve happiness. मानव के सुखधर्मी होने का प्रमाण है. मानव का सुखधर्मी होना सर्व मानव में दृष्टव्य है. The fact of happiness being the dharma of human is apparent in all humans. Okay. Although a person may not be awakened, but still
they are their dharma is happiness. वो सुख धर्मी ही है. सो जितना सुख को समझे हैं या जितना नहीं समझे हैं, उस ना समझी के अंतर्गत भी वो जो कोशिश कर रहे हैं वो सुखी होने की ही कर रहे हैं. जिस भी तरीके से आदमी सुबह से शाम तक अपनी जिंदगी को लगाया हुआ है, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वट एवर ए पर्सन इज डूइंग, वट एवर ए फैमिली इज डूइंग, although they may not be aware of it, they are trying to achieve happiness. If somebody is trying to accumulate a lot of wealth, there is an underlying assumption that wealth will make them happy. Okay, so it is, happiness is the dharma of all humans, whether they are awakened or unawakened. मानव सुख धर्मी होना परंपरा में से के लिए सौभाग्य है. It is a blessing in by for human tradition that happiness is the dharma of humans. तो ये परंपरा में से के लिए, ये भी एक भाषा जो है बाबा जी ने बार बार यूज की है. जो नए साथी हैं उनके लिए इसको ऐसे पढ़ा जा सकता है, मानव सुख धर्मी होना मानव परंपरा में सौभाग्य है, मानव परंपरा से सौभाग्य है, और मानव परंपरा के लिए सौभाग्य. तो जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो व्हाट वी रियलाइज्ड वाज a lot of commas actually make the text a little uneasy to read as well as to speak. So we are trying with obliques here, slashes here. So it is a blessing in human tradition, it is a blessing by human tradition, it is a blessing for human tradition that happiness is the dharma of humans. क्योंकि सुखी होने के लिए व्यवहार व प्रयोग करना स्वाभाविक है. ये में और से के लिए क्या फर्क है? में और से में क्या फर्क है? मानव परंपरा में और मानव परंपरा से, दोनों में फर्क क्या है? ठीक है. हाँ, तो दीदी यहाँ पर शायद हमको इतना क्लियरली नहीं दिख रहा, लेकिन हम सिर्फ इसको नोट कर लें तो कई बारी जो है ना, कई बारी हमको वो दिखेगा कि इसमें काफी जो है वो क्लियरली डिफरेंस जो है वो हो भी रहा है. तो अभी यहाँ पर इतना क्लियरली नहीं हो रहा है, लेकिन फिर एक बार एक फ्रेज बन जाती है ना, मुझे लगता है बाबा जी का भी ऐसा रहा है, हम सब भी ऐसा करते ही है कि अगर एक की फ्रेज बन गया है तो देन वी एक्चुअली ट्राई टू यूज इट फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एज वेल एज फॉर द सेक ऑफ इम्पैक्ट, है ना. तो अभी के लिए यहाँ पर में और से में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. के लिए अलग से मेरे को भी दिख रहा है ना. मानव परंपरा में सौभाग्य है और मानव परंपरा के लिए सौभाग्य है. तो कई बार जो है मतलब वो से भी एक सेपरेट सा मीनिंग आ ही जाता है. अभी कभी आएगा, आई एम श्योर हमारे पढ़ने में, तो हम उसको देख लेंगे. ठीक है. तो सुखी होने के लिए व्यवहार व प्रयोग करना स्वाभाविक है. इट इज, अब क्योंकि वर्ड भी आई डू नॉट नो, आप लोग बताइए कि इसका क्योंकि का भी कोई मतलब लग रहा है. मैंने क्योंकि को 10 करके लिख तो दिया है, बट इज इट रियली रिक्वायर्ड और कैन वी डू विदाउट इट ऑल्सो? आई नीड योर फीडबैक. एक हम ऐसा पढ़ सकते हैं, thus it is natural to keep doing behavior and experimentation which is trial and error for achieving happiness. और दूसरा है इस 10 को रिमूव ही कर दें. It is natural to keep doing behavior and experimentation for achieving happiness. It is a blessing in by for human tradition that happiness is the dharma of humans. Thus, it is natural to keep doing behavior and experimentation. I think it can go like this also. What do you think? I think thus it makes sense in this situation. Makes sense, yes. Because it's yes. tying it to the first Yes. sentence. It's because tying it with the- it's our dharma, that it's inseparable from us. That's why we keep experimenting, trial error all the time. Yes, yes, yes. I also think so. Earlier I was a little confused, but I don't know. Now that I am reading it, I also feel that it can stay as it is. Thanks, Spencer. इसी क्रम में सही गलती होती रही, मतलब इसी क्रम में कभी सही होता रहा, कभी गलत होता रहा, है ना.
ऐसा ऐसा इस सेंटेंस को देख रहे हैं, इसी क्रम में सही गलती होती रही. So when whatever those trials or experimentation one has been making, some of these turned out to be correct while some mistakes were also made. Okay. Anyone has any suggestion on this? Because it continues in the next sentence also. इसको अगर कुछ और तरीके से लिखने का लगे कि कर सकते हैं, if there's another way we can write this, I'm open to that. I think it can be improved. आप सब भी बताएं. अगला सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं, है ना. तो इसी क्रम में सही गलती होती रही, है ना. सही भी कभी सही होता रहा, कभी गलती होती रही. So some of these turned out to be correct while some mistakes were also made. Some of these turned out to be correct, some of these efforts or experiments turned out to be correct. ऐसा मैं अभी ऐसा कोशिश किया. सही को मानव स्वीकारता आया. Humans continued to accept the correct. Okay, so this is where I think that correct जो है ना वो थोड़ा सा I'm feeling it's probably I'll need your feedback if it can be improved. सहीपन को संवेदनशीलता में अनुकूलता प्रतिकूलता के रूप में पहचानते आया. यह प्रक्रिया और शोध हर मानव में होता है. करेक्टनेस कंटिन्यूज to be recognized on the basis of sensory stimulus in the form of like or dislike. All humans have gone through this process of investigation. And ये शोध जो है, शोध को investigation कह रहे हैं. So basically the essence is, first let us see what the essence is and then we can see how if we want to improve it or not. So humans may have been making efforts and experimentation, trials and errors for achieving happiness. Some of those efforts and trials, humans were successful in that and some were not successful. Humans continue to accept the correct. I think now that I am speaking is, although यहाँ पर सही गलत है, क्या इसको सफल असफल वाला सेंस आ रहा है? Can we actually say successful and unsuccessful here? That was the other word that came to mind for me. I'm not sure which is more accurate, but if I had to pick one other word, it would be success, unsuccess. Yeah, right. Let's see if anyone else also has some view. So some of these turned out to be successful, or some of these succeeded while others did not. That's one way we can say it. So some of these efforts succeeded while others did not. Humans continue to accept the. Now what will we see here? उसी सही को जब लिखना है तो humans continue to accept what succeeded. Is it a good phrase, good sentence? Humans continued to accept whatever succeeded or wherever they succeeded. Makes sense, yeah. Okay, and success continued to be recognized or continues to be recognized on the basis of sensory stimulus in the form of like or dislike. Okay, so even though I got a momentary happiness by sensory stimulus, okay, which comes in the priya category, like or dislike, I think I have been successful. Okay, this is the general human thinking. And when I look at myself and my journey, I find myself also in these kind of situations. All humans, and that is what Babaji is saying, all humans have gone through this process and investigation. Okay, so I think let us make these changes. Some of these experiments or trials, let us see what these trials, I'm not sure, trials or experiments succeeded while some did not. Okay, so one we can write like this. Some of these trials
or experiments succeeded while some did not. Humans continued to accept whatever succeeded. And then we say success will maintain the same tense. Success continued to be recognized. Actually, it can be continuous also because abhi bhi ho hi raha hai. It happens in the present tense also. So success continues to be recognized on the basis of sensory stimulus in the form of like or dislike. बताइए, this is any comments on this format, on these wordings now? Does it sound good? Personally, it sounds good. Yeah. Good, thanks. Anyone else? And then for some of these trials or experiments succeeded, that also you want to put in the first form by saying some of these trials of experiments are being succeeded or are successful while some are not. Then like you just want to give the present sense to all of it. Yes. You're right. Now, first let's try to capture the sense here also. इसी क्रम में सही गलती होती रही. Now I'm trying to see it is not only in the past but होती रही और अभी भी हो रही है. मतलब ऐसा कह रहे हैं या here the sense we are getting is only about the past or past and present. इसी क्रम में सही गलती होती रही. Yeah, it looks both ways, but if we are converting the next para into the present line, then this goes along with it. Yes. Good, Divya. So please tell me, what did you say? Some of these trials and experiments are successful and some are not. Were successful. Or the trial experiments are successful and some are not. Well, some are not. While some are not? Yeah, or whatever way you want to put in the form of failures, then we'll give a... While some are not, humans continue, इसको भी फिर continue कर देते हैं. Continue to accept whatever succeeded. Success continues to be recognized on the basis of sensory stimulus in the form of like or dislike. Spencer, does it sound good? Just humans continue to accept whatever succeeds, possibly. Yeah, this is good. Yes, I think we have tried to conform to the original text and try to capture to the extent possible. And I think the main idea is one, that the translation becomes better, and the second is we also get a sense of what Babaji is saying. So I think the second part is the main motivation for us, which improves our own state, and then the translation is our participation in the larger order. व्यवस्था में भागीदारी जो है वो हमारी ट्रांसलेशन से हो रही है, और इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में हम स्वयं समझ रहे हैं, हमारी अपनी स्थिति जो है वो इंप्रूव हो रही है. तो एटलीस्ट दिस पार्ट इज क्लियर दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट मींस, है ना. उसको शब्द में कैप्चर करना जो है वो धीरे धीरे और भी देख लेंगे जितना ठीक हो जाएगा. ये जो सही को मानव स्वीकारता है, दैट मीन्स इन द वे ऑफ लाइक परंपरा के रूप में स्वीकारता है. यही मतलब है that we like continue doing that thing. मतलब जैसे ना इसको ऐसे देखेंगे, सुखी होने के लिए व्यवहार या प्रयोग करना स्वाभाविक है. तो आदमी सुखी होना चाहता था, उसके लिए कोशिश करता है, उस कोशिश में सही गलती होती रही, है ना. तो जो सही होता रहा वो मानव स्वीकारता रहा. मेरे को लग रहा है कि ये दोनों चीजें हैं.
इसमें. It is true for individual humans also and it is true in the form of tradition also. परंपरा के रूप में भी सही है और इंडिविजुअल के रूप में भी सही है ना. तो परंपरा में जो ठीक ठीक लगता रहा आदमी उसको भी स्वीकारता रहा. फॉर एग्जाम्पल, we have seen in the last I do not know, last few generations, let us say last 100 years or so, 50 years or something, at least in Indian context, probably it is true the world over also, that schooling has been accepted as something which is good, है ना. सब बच्चे स्कूल जाएंगे, ये वाला जो है, ये वाली चीज जो है ना, वो परंपरा में ऐसा देखा गया कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो पढ़ लिख जाते हैं, तो उसके बाद में वो फाइनेंशियली जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जॉब कर पाते हैं, बिजनेस कर पाते हैं, इससे आदमी सुखी होता है ना. परिवार में खाने पीने की कमी नहीं रहती है. इसको परंपरा ने स्वीकारा, तो अगली जनरेशन में ज्यादा बच्चे स्कूल जाते रहे, है ना. With every passing generation, the percentage of children going to school has been increasing because in the form of tradition, परंपरा में schooling has been accepted as something which gives happiness in the family, because on the basis of schooling one gets jobs and all. तो एक तो परंपरा के रूप से देख सकते हैं, और उसके बाद में आदमी को जो भी एक्टिविटी करने से किसी इंडिविजुअल को अच्छा लगता है ना, तो आदमी उसको रिपीटेडली करता है ना. somebody wants to go for adventure, trekking, mountaineering or something, और वहां पे उसको अच्छा लगता है, तो one plans to do it again and again, every year, twice a year, thrice a year, है ना. तो वो इंडिविजुअल लेवल पे भी ये वाले एफर्ट्स जो है वो देखते हैं. And if someone does something to become happy and then he encounters some accident in that, probably they change their approach. अरे भैया सुखी होने के लिए गए थे, एक्सीडेंट हो गया, दुखी हो गए, इसको आगे से नहीं करना है. तो मैं इसको ऐसा इंटरप्रेट कर रहा हूँ. दीदी, आप में से भी, आप सब साथियों को भी इसका कुछ और इंटरप्रिटेशन समझ में आता हो तो बताएं कैसे देखते हैं, whether it is true only for in one aspect or in both aspects. सही लग रहा है भैया. एंड दूसरी चीज इसमें यही बोला ना कि सही के लिए जितना भी हुआ वो सब मीन सेंसरी हैप्पीनेस में गया. संवेदनशीलता सिर्फ और सिर्फ सेंसरी के लिए ही, जो भी सही हुआ वो भी सिर्फ सेंसरी में ही हुआ. Correct. जी. That has been the general trend. ठीक हो गया? Good. अनुकूलता में सुख भासना दूसरा सौभाग्य रहा. Okay. Feeling momentary happiness in likable situations was the second blessing. क्यों? क्योंकि सुख भासने के आधार पर ही सुख की निरंतरता की अपेक्षा, कल्पना और प्रयोग होना स्वाभाविक रहा. Because it led to expectation, imagination and experimentation for the continuity of happiness. This momentary happiness is not all that bad. This is what Babaji is saying here. This momentary happiness, its purpose is, or we can even say that this has been the second blessing. This has been a blessing because it raised hopes in humankind for continued happiness. If I can be happy for a few moments, then it forms the basis for for achieving continuous happiness. हाँ, जैसे परिचय शिविर में आता है ना, अगर इंद्रियों में सुख का भास ना होता तो हमें सुख का पता भी कैसे चलता. पता भी ना चलता. एग्जैक्टली, है ना. सोम भैया इस भाषा को यूज करते ही हैं कि कम से कम इंद्रियों के माध्यम से हमारा सुख से परिचय तो हुआ है. और our senses or sensory stimulus, at least it introduced us to happiness. It might not be able to provide us continuous happiness, but at least it gave us the taste of happiness, based on which expectation, imagination and experimentation for continuity of happiness started, जिसके आधार पर प्रमाणों का लोकव्यापीकरण उदय होता रहा. Examples and evidence that seemed to achieve this continuity of happiness became popular. Okay, तो
उसमें जहां जहां पर जो है वो हैप्पीनेस की एक्सटेंट बढ़ती रही, वो वाली चीज परंपरा में स्वीकार हो। इस प्रकार मानव के अपने सौभाग्य को पहचानने, प्रयोजनशील होने, प्रमाणित होने और प्रमाण परंपरा बनाने की सीढ़ियां अपने आप से लगी है। Thus, humans recognizing their blessing, being purposeful, being evidence and establishment of tradition of evidence. These steps are already naturally in place. Okay? They are already in place. We don't have to make efforts. This is how the journey of humankind has unfolded so far, and this is how it will unfold. So this is what is saying, what is being said. कि ये सौभाग्य को पहचानने, प्रयोजनशील होने, प्रमाणित होने और प्रमाण परंपरा बनाने की सीढ़ियां। तो प्रमाणित होना पहले इंडिविजुअल लेवल पे होगा, फिर उसकी परंपरा बनेगी, है ना। तो इसी को स्टेप्स में कह रहे हैं। Thus, humans recognizing these blessings, being purposeful, being evidence, and establishment of tradition of evidence. These steps are already naturally in place. तो ये शब्द ना बार बार आते हैं। मुझे लगता है कि जब भी ये आए, हमारे कई साथी नए हैं यहाँ पर, ओके, तो इसको हम ना थोड़ा सा देखते रहें कि ये कह क्या रहे हैं। प्रमाणित होना और प्रमाण परंपरा, okay, so being evidence and establishment of tradition of evidence. So being evidence is someone becomes an evidence. For example, we look at Shri A. Nagaraj as the evidence, as an evidence of an awakened human. वो जागृत मानव का प्रमाण के रूप में है। You know what Babaji is saying is that it is not the first time that someone has become awakened. You know, in history there have been people who were wise, who were awakened, but what has lacked in history so far is that the tradition of awakened people has been missing. Okay, so what Babaji is saying is something which I find very, very powerful. It has a huge impact on me personally, that I being wise is the first step, but this is not the ultimate step. Okay, because I will not always remain on this earth as a human. Okay, my body has a limited duration. You know, it may be on this earth for 60, 70, 80, 90, 100 years. But wisdom must stay on this earth. Okay, that is the important part. Future generations should also remain wise. So this multiplication of wisdom, this multiplication of awakening, this is what is being said as the establishment of tradition of evidence. So one person becomes evidence is one achievement, or is the first step of achievement. Okay, that has happened in the humankind earlier also, but this one person is able to trigger a process by which in future generations more and more people become awakened. This has been missing in the human history so far. We, you know, like we can take names. I started off, but now I think that probably I want to avoid that. But whomsoever we consider have been the good people in the past. Okay, the only sad aspect is when those good people leave this earth, after that we still have earth in a bad shape. Okay, so this tradition of goodness must continue. This is our role. If we consider ourselves as good, okay, this is not enough. Okay, so I think one thing for which I shall, I mean, not on one thing, but one thing, one aspect which I think has given me some purpose personally in my life is being good myself. Earlier I thought it's an achievement. Now I think it's a step in a journey. Okay, so being good is good. Okay, but this goodness has to multiply also from generation to generation. This is the establishment of tradition of evidence. These steps are already naturally in place. Okay, बस एक बार हमारा ध्यान इस तरफ चला जाए,
just our attention needs to be drawn to this side, which Babaji has done beautifully, and for that we are ever grateful to him कि ये हमारे को अपना पता चल गया कि हमारा रोल क्या है. So I hope it makes sense the way I have explained it, जितना मेरे को, जैसा मैंने अपने में देखा. Spencer, does it make sense? Yeah, yes, it does make sense. It is a nice perspective that is just one step along the way that really, unless the tradition is there, that would be more complete. Yeah. Good. So I see that there are many other participants also, and I repeatedly request them also to at least some time or the other respond also. बीच में जो है अपने भी आप कमेंट्स देते रहें प्लीज. मैं देख रहा हूँ विपुल भाई हैं, तारा दीदी हैं, आज मैं देख रहा हूँ. तारा दीदी नमस्ते, आवाज आ रही है तारा दीदी? शैलेंद्र भाई नमस्ते. नमस्ते भैया, नमस्ते. नमस्ते नमस्ते. भुवन भाई नमस्ते. तो भैया वो आपने अभी थोड़ा पहले पूछा था ना कि वहां पर 2-3 दिन से मेरे मन में चल रहा है कि ये सब कार्यवाही कहाँ जा रही है मेरे अपने अंदर. तो मुझे बाद में पसंद आया, ये चेतना विकास है, यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर जाना है इसको. बिल्कुल बीच बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है, मतलब तो मतलब टारगेट क्या है, ये बात निकल के आई बात. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. गुड थोड़ा सा गुड गुड. भुवन भाई भी कुछ कह रहे थे. जी भैया नमस्ते. मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि आई एम वेरी न्यू टू दिस दर्शन, सो maybe I'm not that much of I'm not having that much of clarity on the Hindi part of the darshan, so I'm not able to say anything in English. However, I am getting connected to very deeply, like while you are translating it and taking us word to word, so I am trying to connect with myself with those words, and then it is helping me to understand in Hindi and English in the both the language right now. So maybe I'm not able to right now to give any input to make it more concrete. However, the seniors are here. I'm sure they are helping you, and I'm learning from all of you, sir. गुड गुड गुड. भुवन भाई, आप ऐसा कह रहे हैं ना कि ये ट्रांसलेशन से आपकी क्लियरिटी बन रही है. एक्चुअली हमारे साथ भी यही हो रहा है, ऑनेस्टली लाइक मतलब ट्रांसलेशन के एफर्ट में हमारी अपनी भी क्लियरिटी बन रही है. दैट इज अवर मोटिवेशन. और बढ़िया है. गुड. दिव्य से बात हो गई, हितेश जी से बात हो गई. इंदु जी नमस्ते. नमस्ते भैया. नमस्ते दीदी. नमस्ते. दीदी आपकी आवाज नहीं सुनी थी, इसलिए बीच में मैं ना ऐसा कर लिया करूंगा, और मेरा मन भी रहता है कम से कम सब लोगों का कुछ ना कुछ एक हेलो सा आ जाए, और कैसा चल रहा है दीदी ये भी साथ में बताते रहें. हाँ भैया ठीक चल रहा है. बीच में मेरा थोड़ा सा बिजी हो गई थी, तो 2-3 क्लासेस मिस हो गई थी. कोई नहीं, ठीक है. सही चल रहा है. मुझे अच्छा लग रहा है इसमें, मतलब समझ भी आ रही है चीजें काफी. ठीक है. गुड गुड दीदी, बढ़िया है. स्वागत है. प्रोमिला जी. भैया नमस्कार. नमस्ते दीदी. नमस्ते. मेरी भैया आज मेरी पहला ही डे है. मैंने आज ही ज्वाइन किया. अभी मैं समझने का प्रयास ही कर रही हूँ. मैंने भी आपका नाम पढ़ा तो मुझे भी नया लगा. कहाँ रहते हैं दीदी आप? मैं रोहिणी में रहती हूँ. ओके ओके. सेक्टर तो 24. कैसे, ओके, तो ये सूचना कैसे मिली आप तक? ये वो एक्चुअली मैं स्कूल की हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर हूँ, तो वो मंजीत सर से जुड़ा रहता है ना, तो ग्रुप पे डाल रखा था सर ने, तो मैंने ज्वाइन कर लिया कि फ्री थी. मैंने एकदम देखा मैसेज, और मैंने अपना अध्ययन के लिए मैं प्रयास भी कर ही रही थी, लेकिन अभी डिपार्टमेंट ने हमें भेजा नहीं, तो अभी मुझे और सीखने की थोड़ी इच्छा सी है ही. अभी जीवन विद्या के बारे में कुछ और जानूं. अभी जर्नी स्टार्ट ही हुई है.
ठीक है, बढ़िया दीदी, स्वागत है एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू। ठीक है, तो बस अभी तारा दीदी की और विपुल भाई की आवाज नहीं सुनी अभी तक। अगर सुन रहे हैं तो उनसे भी हेलो हो जाए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई नहीं। तो सी द पर्पस ऑफ दिस इज वन, इफ आई एम स्पीकिंग अलोन आई फील अलोन। Okay, so for 1.5 hours, that is not a good feeling. And if I'm talking only to 1 or 2 persons, that also is not a good feeling. Okay, ऐसा लगता है कि बाकी सब लोग सिर्फ सुनने के लिए आए हैं, वो भी मेरे को अपने अंदर से ऐसा भाव आता है कि भैया ये भी ठीक नहीं है। तो more important than that, what I feel is that because we are talking about conversations, behavior centered conversations, है ना, व्यवहारात्मक जनवाद की बात हो रही है, आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे तो अपने में व्यक्त होने का भी अभ्यास होता है। ओके, एक अपने में ऐसी प्रैक्टिस भी हो पाती है कि हाँ, हम भी इस कंटेंट पे बात कर सकते हैं। एंड दिस मीटिंग इज ए गुड गुड प्लेटफॉर्म टू ट्राई इट आउट, है ना। हम सब की जर्नी साथ साथ ही चल रही है। आप व्यक्त हो, व्यक्त होने में फिर जो है ये हमारा इस भाषा के ऊपर और इस भाषा के पीछे, इन शब्दों के पीछे जो एसेंस है, उसके ऊपर अपनी कमांड बनती है। तो फिर हम जिस भी परिवेश में जी रहे हैं, अपने परिवार में और अपने आसपास के लोगों के साथ में, उनके साथ भी फिर हमारा इस बारे में बातचीत करने का अभ्यास बन पाता है ना। उसमें हमारी थोड़ी आगे बढ़ने की एक कैपेसिटी जो है वो बनती है। तो चुप रहेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन समझ में आना भी एक चीज है, कहीं ना कहीं पर हमें व्यक्त भी होना है। तो सब अपने में ऐसा सोच सकते हैं कि व्यक्त होने का यहाँ पर पूरा अवसर है, एंड वील वेलकम दैट। आपको जैसा अपने में ठीक लगे, अनुकूल लगे, बीच बीच में होते रहें व्यक्त। इतना मेरे को कहना था अभी के लिए। तो प्रमाणित होने की सीढ़ियां बनी है। यह सब मानव प्रवृत्ति की सहज सीढ़ी है। ऑल दिस इज नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ ह्यूमन टेंडेंसीज, है ना, मानव प्रवृत्ति को, ह्यूमन टेंडेंसीज का। इस क्रम में मानव हर नर नारी अपने प्रयासों को बनाए रखना देखा जा रहा है। इन दिस ऑर्डर इट इज सीन दैट ऑल ह्यूमंस, ऑल मेन एंड वुमेन आर कंटिन्यूइंग विद देयर एफर्ट्स। इसी क्रम में संवेदनशीलता के अनुकूलता के मुद्दे में पराकाष्ठा, यानी व्यसन में मनमानी पर पहुंचने के उपरांत भी सुख की निरंतरता का रास्ता अभी तक तय नहीं हो पाया है, व्यवहारात्मक जनवाद दिशा निर्धारित करने के पक्ष में प्रस्तुत है। सो इट इज इन दिस ऑर्डर that in spite of reaching the peak on the point of sensory happiness, अनुकूलता के मुद्दे में पराकाष्ठा, पराकाष्ठा को पीक कह रहे हैं, in spite of reaching the peak on the basis of sensory happiness, or even after getting addicted to sensory happiness, है ना, व्यसन तक भी, उसको व्यसन कह रहे हैं, व्यसन इज एडिक्शन। Even after getting addicted to sensory happiness, humans are yet to find the way to continuity of happiness. Okay, so behavior-centered conversations is being presented to help in finding the direction for the same. Which direction for what? Direction for continuity of happiness. Sensory happiness, humans have tasted, they have experimented. All around us, if we see, you know, fancy cars, fancy homes, fancy clothes, amusement parks, shopping malls, whatever we see, TV, all this is what it is doing. It is giving us sensory happiness. So much so that humankind has got addicted to sensory happiness. Okay? But humans are yet to find way to the continuity of happiness. So actually, Babaji is saying behavior-centered conversations. I take the liberty of saying that it is the whole Madhyas Darshan which is giving us the direction of the same. So behavior-centered conversation is an integral part of Madhyas Darshan. So this book is also giving us that direction. Whole Madhyas Darshan is also giving us that direction. सुख अर्थात समाधान का अनुभव होना पहले जिक्र किया गया है।
रियलाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस और रिजोल्यूशन हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, है ना, पहले से ही इसका जिक्र तो कर ही चुके हैं। मानव ही अनुभव योग्य इकाई है। ओनली ह्यूमंस हैव द कैपेसिटी ऑफ रियलाइजेशन। जीवों में संवेदनाओं की स्वीकृति होना और संवेदनाओं के विरोध को नकारते हुए देखा जाता है। Animals are seen to be accepting the sensorial likeness and rejecting the sensorial dislikeness. जीवों में संवेदनाओं की स्वीकृति होना और संवेदनाओं के विरोध को नकारते हुए देखा जाता है। मानव भी ऐसा ही करता है। Humans too do the same. So the sense here is deluded humans to do the same. संवेदनाओं से जो सुख भासने का मुद्दा है वह मानव में ही होता है। Getting the impression of happiness through sensory likeness, this happens only in humans. क्योंकि जीवों में प्रतिकूलता होते हुए भी समाधान के लिए शोध अनुसंधान करता हुआ देखने को नहीं मिलते। This is a very interesting observation. I want to highlight it. Whenever we read it, we should immediately, this should catch our eye, because animals, even in situations of sensory dislikeness, are not seen to be investigating or exploring for resolution. Okay, so this is a demarcation between animals and humans. So humans also have sensorial likeness and sensorial dislikeness. Animals also have sensorial likeness and sensorial dislikeness. What is the difference? When humans are in situations of sensorial dislikeness or sensory dislikeness, they explore further, they investigate for resolution. They think that they lack some understanding, and then they make efforts for that. This tendency is not seen in animals. They just avoid the situations which they dislike. So this is so मानव जो है वो समाधान के लिए शोध अनुसंधान करता हुआ देखने को मिलता है। जीव जो है वो समाधान के लिए शोध अनुसंधान नहीं करते हुए मिलते, वो सिर्फ जो है वो अनुकूलता और प्रतिकूलता, likeness or dislikeness, they are just swaying between these two aspects. Humans, they are making, this is something which we can see in the history of humankind, that there is a continuous effort, continuous investigation, continuous exploration for resolutions. Okay, so this is something which is a very well explained here, very well drawn out. इस प्रमाण से पता चलता है जीव संसार सभी प्रतिकूलता और अनुकूलता को स्वास्थ्य के अर्थ में ही पहचानता है। From this observation, we conclude that animals recognize all dislikeness or likeness only for health. कि तो उनका जितना भी जो है वो अनुकूलता प्रतिकूलता है वो स्वास्थ्य के अर्थ में, शरीर के अर्थ में। if we say swasthi, it relates to body, but we can, even for the sake of discussion, we can say that only for the health, only for the body, whatever they are doing, they recognize all likeness or dislikeness in the sense of health or body. इसी आधार पर जीव संसार को जीने की आशा के आधार पर जीवनी क्रम में जीता हुआ पहचाना गया है। So it is on this basis of their hope to remain alive that animal world has been recognized as part of living world progression. So जो चार अवस्थाएं हैं, okay, 4 orders in nature, उसमें पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था, इन चारों अवस्थाओं का अपना अपना धर्म जो है वो बताया गया है। So the dharma of material order is existence, है ना, अस्तित्व ही पदार्थ अवस्था का धर्म है। अस्तित्व मतलब पदार्थ अवस्था का अस्तित्व नष्ट नहीं होता, उसका फॉर्म चेंज होता है,
लेकिन मैटर जो है वो बना ही रहता है, मैटर का एग्जिस्टेंस जो है वो समाप्त नहीं होता। तो मेटीरियल ऑर्डर जो है वो उसका धर्म है एग्जिस्टेंस, प्लांट ऑर्डर का धर्म है ग्रोथ, पुष्टि। जीवावस्था का धर्म है जीने की आशा, होप टू रिमेन अलाइव। ओके, सब पशुओं में हमको जीने की आशा दिखती है, दे वांट टू रिमेन अलाइव, जिंदा रहना चाहते हैं। मानव जो है ज्ञानावस्था, इनका धर्म क्या है? द फोर्थ ऑर्डर इन नेचर, द नॉलेज ऑर्डर और द ह्यूमन ऑर्डर, दे वांट टू रिमेन अलाइव एंड दे वांट टू बी हैप्पी ऑल्सो। तो मानव का जो है वो सुख धर्म है, मानव सुख धर्मी है। ये जो एक की फ्रेज मध्य दर्शन में बार बार आता है। तो यहाँ पर ये जो धर्म है, इसकी जीव संसार को जीने की आशा के आधार पर, तो ये जीने की आशा जो है ये जीवावस्था का धर्म है। तो इसके आधार पर इसको जीवनी क्रम में पहचाना गया ना। तो उनको पहचाने, दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड प्रोग्रेशन, और उनका धर्म जो है वो होप टू रिमेन। हर जीव में जीने की आशा का होना हर मानव को बोध होता ही है। The fact that all animals have a hope to remain alive is easily understood by all humans. कि इसके लिए कोई बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब इट बिकम्स इजीली क्लियर। यद्यपि जीवों में जीवन जीने की आशा को ही प्रमाणित कर पाया है। Although in animals जीवन has been able to demonstrate only the hope to remain alive. ना उसमें हैप्पीनेस वाला ट्रेट नहीं है, वो जीने की आशा है, वो जिंदा रहने की आशा है, होप टू रिमेन अलाइव है, और उसी में ही अनुकूलता और प्रतिकूलता है ना। सेंसरी स्टिमुलस से ही लाइकनेस एंड डिसलाइकनेस आता है। दे डू नॉट एक्सप्लोर और इन्वेस्टिगेट फॉर कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। इसके मूल में यह भी पहचान में आया है कि शरीर को जीवन मानते हुए जीते हैं। At its root, this too has been recognized that they assume the body to be the जीवन। इसलिए स्वस्थता के आधार पर अनुकूलता प्रतिकूलता को पहचानना करता है। Therefore, they recognize likeness and dislikeness on the basis of health। यही जीव संसार का शरीर को जीवन मानने का प्रमाण है। This is the proof of the animal world assuming their body to be the जीवन। Okay, now in this background, in the next paragraph, now Babaji is linking that what is happening in humans is deluded humans are in two categories: deluded humans and awakened humans. So deluded humans, how do we recognize them? They also consider themselves to be body only। वो शरीर मूलक विधि से जीते हैं, इंद्रिय सुख से सुखी होने की कोशिश करते हैं, इंद्रिय सुख से निरंतर सुख को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। In that sense, sorry, 1 second. In that sense, deluded humans are not any different from animal order. Okay. In at least in Indian Vedic parampara and a lot of knowledge that is traditionally available, there are a lot of shlok and poetry and prose, which which sort of tries to convey, and it starts from the schooling itself, from the stage of schooling itself, that a person who does not have wisdom, a human who does not have wisdom is nothing but an animal only। तो यहाँ पर भी बाबा जी ये ज्ञानावस्था में मानव जो है, अगर मानव ज्ञानावस्था में तो नेचुरली है, लेकिन अगर वो ज्ञान के बिना है, तो although present in knowledge order, if humans are devoid of knowledge, they are nothing but animals। ठीक है, तो व्हाट इज दैट डिस्टिंग्विशेस विद एनिमल्स एंड ह्यूमंस? हम लोग बाय अवर शेप, अपने हम आकार से तो मानव है, आचरण से मानव होना शेष है ना। बाय अवर शेप वी आर नेचुरली ह्यूमंस, बट बाय अवर कंडक्ट, बाय अवर विजडम, बाय अवर नॉलेज, वी नीड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट वी आर ह्यूमंस। दैट पार्ट इज लैकिंग इन ह्यूमन ट्रेडिशन।
Okay, that's why humans have been indulging in mistakes and they are committing crimes also. So while in pursuit of sensory humans, while in pursuit of sensory happiness, these mistakes are bound to happen. These crimes are bound to happen as long as humans will try to achieve happiness through sensory stimulus only. ये जो है, ये बार बार जो है, शरीर को ही, मैं केवल शरीर हूं, आई एम ओनली बॉडी. As long as one lives under this assumption, then one tries to get all happiness through physical body only. This is the mistake which has been going on and on. तो बाबा जी कह रहे हैं, जीवन को मैं जीवन हूं ये पता ही नहीं चलता. जीवन assumes itself to be the body. So while Jivan is Jivan, body is body, this only Jivan can recognize, and this only Jivan can recognize in knowledge order. Animals also have Jivan. That Jivan, while in the body of an animal, does not have the capacity or does not have the resources to come to that conclusion. Okay. So it's a blessing for humans that they have a body by use of which they can reach this conclusion and then live like that and then form a tradition, establish a tradition of. इतना जो है लिखने के बाद में, मानव भी या तो जीवों के सदृश्य शरीर को जीवन मानते हुए अथवा नहीं मानते हुए जीता है. इससे पर्याप्त ज्ञान न होना स्पष्ट हो गया. In case of humans, they too live either in a manner similar to animals and assuming the body to be the Jivan, or not assuming so. So one possibility is they live in a manner similar to animals, which is they assume their body to be Jivan, and the second possibility is they do not assume so. Okay? It is thus clear that they lack proper knowledge. तो इससे प्राप्त ज्ञान ना होना स्पष्ट हो गया, क्योंकि एक मेजॉरिटी जो है वो अपने को एनिमल्स की तरह ही जी रही है, भ्रमित अवस्था में ही जी रही है. तो इसका मतलब यह है कि अभी मानव परंपरा में प्राप्त ज्ञान नहीं है, पर्याप्त ज्ञान नहीं है. जितना भी ज्ञान है वो अभी पर्याप्त नहीं है, परंपरा के रूप में एस्टेब्लिश नहीं हुआ है. In rare cases, in some individuals, we may see that to some extent or the other, but it is generally not widespread. So it is thus clear that they lack proper knowledge. हर मानव सुखी होना चाहता है. सुखी होने का स्रोत, होने का नित्य स्रोत समाधान है. All humans want to be happy, and resolution is the eternal source of happiness. समाधान ही सुख के रूप में अनुभूत होता है. Resolution itself is felt in the form of happiness. इसका मतलब यह हुआ समाधान ही सुख है. It means resolution itself is happiness. ऐसे समाधान के मूल में समझदारी का होना अनिवार्य है. Essentially, understanding is at the root of such resolution. समझदारी का फलन समाधान है. समाधान का फलन सुख है. Happiness is the fruit of resolution, and resolution is the fruit of understanding. इस क्रम में हर नर नारी के सुखी होने का स्रोत नित्य वर्तमान है, समीचीन भी है. In this way, the source of happiness is eternally available to all humans, males and females, and is nearby to. Okay, it's not difficult to achieve. समीचीन का मतलब है आसपास ही है, मतलब कोई ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने हैं, मतलब है ना, कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है. एंड इज, तो उसको कह रहे हैं इट इज नियर बाय टू, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अचीव. समीचीनता का तात्पर्य है हमारे प्रवृत्ति के आधार पर समाधान नित्य सुलभ है, क्योंकि समझदारी को प्रमाणित करने का अरमान हर नर नारी में समाहित है. द मीनिंग ऑफ नियर बाय इज बेस्ड ऑन अवर इंक्लिनेशन और प्रोपेंसिटी. प्रवृत्ति के लिए हमने, हमारे प्रवृत्ति के आधार पर, तो प्रोपेंसिटी के लिए हमने प्रवृत्ति के लिए प्रोपेंसिटी वर्ड यूज किया. So based on our propensity,
resolution is eternally and easily available. समाधान नित्य सुलभ है, is eternally and easily available because the desire to authenticate the understanding is inherent in all humans, males and females. समझदारी को प्रमाणित करने का अरमान हर नर नारी में समाहित है. ठीक है? Now, like because it is conversations, और इस मेरे को ऐसा लगता है अपने में that whatever Babaji is writing, the it's an important thing for us to sort of explore it also, that from where it is coming and what is its practical implication. How can we verify it in our life? Like when Babaji says that समझदारी को प्रमाणित करने का अरमान हर नर नारी में है. The desire to authenticate the understanding. Authenticate the understanding means to authenticate that I am knowledgeable, to authenticate that I know something, to authenticate that I am wise, to authenticate that I have understanding. This is inherent in all humans. This is what Babaji is saying. When I sort of thought about it and tried to practically verify in my life, it became easily verifiable. I see quite a few situations around me, and here also I'm raising this topic so that you also, all of you also start thinking like this. And if you have already thought about it, let's have some sharing also. What I realized was, when I observed was around me, it is not only in the physical sense that people feel hurt or unhappy when a few people are talking to each other, or when A is talking to B. I have seen that if there are certain situations or certain circumstances in which a comment is made regarding a person that you do not know anything, you do not know anything, something, okay, the person doesn't feel good. मतलब आदमी को ये बोल दे कि भैया तुम जानते नहीं हो, तुम समझते नहीं हो, तुम्हें नहीं पता है, अरे तुम चुप रहो, okay, just keep quiet, you don't know anything. The person feels bad. Okay, we must have encountered these situations, but now that we are specifically looking at it, what is behind all this is the person to whom this sentence is being said, just be quiet, you do not know anything. It is not acceptable to the person that he doesn't know anything. The person knows something. The person thinks that he or she knows something. He or she is wise, and being told that you do not know anything is not acceptable to the person. So consciously, subconsciously, unconsciously, हर व्यक्ति अपनी समझदारी को प्रमाणित करने के क्रम में ही है. Okay, consciously, subconsciously, unconsciously, every person is trying to authenticate, is trying to give evidence, give proof of their own knowledge or understanding. Okay, तो ये मेरा ध्यान गया, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि मतलब कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा थोड़ी है, मतलब आदमी कोई अपनी समझदारी को प्रमाणित करने में ही लगा हुआ है, मतलब ऐसे वी आर नॉट मेकिंग एनी प्रोबेबली overt efforts for that, but somewhere at a unconscious level, it is not acceptable to us that we be recognized as someone who lacks understanding, who lacks knowledge. तो उसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं कि समझदारी को प्रमाणित करने का अरमान हर नर नारी में है. समझदारी के फल के अनुसार समझदारी का प्रमाण हो पाता है. अंडरस्टैंडिंग इज एविडेंस्ड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो अब इसका प्रमाण होगा कैसे? जो भी आदमी है उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उसका जो भी फल परिणाम आ रहा है, उसी के बेसिस पे ही उसकी समझदारी या समझदारी की कमी प्रमाणित हो रही है. एवरी पर्सन is doing something, is busy in doing something, and is getting results of that doing.
Okay, now that result may be good or bad. Okay, it may be giving happiness or unhappiness. So the evidence of understanding is the result of understanding. Result understanding is like whatever we do and its result which we are getting, that establishes whether at the core we have understood or we have not understood. We have knowledge or we do not have knowledge. We are wise or we are unwise. Okay, so मतलब ये इतना मेरे को लगा. आई डोंट नो वेदर आई कुड एक्सप्लेन इट क्लियरली और नॉट. आप में से भी कोई शेयरिंग करेंगे इस वाले एस्पेक्ट को कैसे देख रहे हैं अपना लाइफ में. इफ सम ऑफ यू वांट टू शेयर इट, दैट विल बी इंटरेस्टिंग. आई वुड लाइक टू हियर. भैया मेरा एक और चीज पे भी गया, मतलब इसमें लिखा है ना कि ये जो सुखी होने का स्रोत नित्य वर्तमान है और समीचीन भी है, आसपास ही है. अभी तो देख के ऐसा लगता है भैया बहुत मेहनत, मतलब कैसे होगा ये. और कभी कभी तो ऐसे आता है शायद इस शरीर यात्रा में तो नहीं, जब शिक्षा विधि में आ जाएगा तो तभी होगा. तो कभी ऐसा भी जाता है दिमाग में. तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है दीदी. देखो हो क्या रहा है कि मानव जाति के इतिहास को देखें तो लाखों साल से चल ही रहा है. ठीक है, तो लाखों साल से चल रहा है तो 150 साल और भी चल गया तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं है. लेकिन अगर जब हम मेहनत करते हैं तो इस शरीर यात्रा में भी इतना तो बड़ा क्लियरली पता चलता है दीदी दैट वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. Okay, so in a 10-year period, in a 20-year period, we can evaluate our own progress. I think what you were sharing, आपने थोड़ी देर पहले बताया भी था जब ये सेशन शुरू होने से पहले 2-4 मिनट हम लॉग इन किए थे कि आपका अभी एक परिचय शिविर भी नहीं हुआ है ना. अभी आपने पिछले 1 साल से ये ऑनलाइन मीटिंग्स और ये शुरू किया है. तो इसमें स्पीड थोड़ा स्लो हो सकती है और ऐसा लगेगा कि भैया ये तो पता नहीं कब जाके होगा. लेकिन हम इसमें अपने को इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम लगाते हैं. तो वी कैन इजीली सी दीदी. मतलब ये ना फिजिकल सेशंस करने से भी, फेस टू फेस सेशंस करने से भी काफी क्लियरिटी बनती है. ऑनलाइन सेशंस की एक लिमिटेशन है. फेस टू फेस सेशंस में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है क्लियरिटी की और जो एक दूसरे के प्रति भाव पहुंचता है, तो उससे अपने में स्पीड और भी तेज होती है दीदी. तो अभी आपका समय कम हुआ है, परिचय शिविर भी नहीं हुआ है, तो लग रहा है आपको कि बहुत समय लगेगा. ठीक है, लगेगा तो भी ठीक है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है. इतना मैं आपको आश्वासन भैया देना चाहता हूं. वो तो मैं थी, यही देश है. अच्छा, हाँ ओह भैया सॉरी छोड़ सॉरी दिया था सॉरी. परिचय अच्छा, शिविर मैं को. आप दोनों में कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा थोड़ा. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है. तो नहीं, वैसे ये हम हितेश. दोनों का डिस्कशन था. हाँ ये जी थोड़े लास्ट वीक ना मैं और प्रभा दीदी हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे. यही हम दोनों ही डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा लगता है कि आगे शिक्षा विधि में आएगा ना तभी जागृति के लिए वो होगा. अभी तो बस प्रयास करते रहो. हाँ, तो हम देखिए मतलब हम इस प्रयास में लगे रहेंगे. ये शिक्षा जैसा ही है, जरूरी नहीं है कि अब क्लास में ही जाके करना है. अब हमारा क्लास में जाने का टाइम तो रहा नहीं, स्कूल में जाके बैठेंगे. लेकिन जैसे परिचय शिविर होता है, अध्ययन शिविर होता है, वो भी क्लास जैसा ही रहता है. जैसे हमारे यहाँ पे एक शब्द यूज होता है ना, प्रौढ़ शिक्षा, हाँ है ना, एडल्ट एजुकेशन. तो अभी हम लोग जो है वो उस एडल्ट एजुकेशन वाले फेज में हैं. तो हम उसमें अपना बने रहे दीदी. मेरे को ऐसा लग रहा है कि बने रहने से, और जितना फिजिकल सेशंस भी अटेंड कर पाए और बाकी अपना पठन भी चलता रहे, है ना, यूट्यूब भी अवेलेबल है ही, तो इन सब चीजों से प्रोग्रेस तो होगी. आपका पहला परिचय शिविर कब हुआ था हितेश दीदी? भैया मेरा अक्टूबर 21 में हुआ था, नाथद्वारा में सोम भैया का. हाँ, चलो, तो आपका भी अभी ज्यादा देर तो नहीं हुई ना, देखा जाए तो अभी ओनली 1.5 ईयर्स ही हुआ है फर्स्ट शिविर में, हाँ जी. है ना. तो मतलब इतनी जल्दी ये ना मान ले के बहुत मुश्किल है. हाँ भैया थोड़ा ना इसलिए भी कि परिवार में ऐसा सभी रहते हैं ना, थोड़ा आसपास का माहौल अभी मेरा नहीं है. मैं बस जितना भी मेरे को हेल्प होते है वो ऑनलाइन ही रह पाती है. और थोड़ा प्रभा दीदी है जिनसे मैं कनेक्ट रहती हूँ. बाकी ऐसा जब एक परिवार होने लग जाता है ना तो ज्यादा
हो जाता है। अभी मेरे परिवार में इतना ज्यादा वो एक्सेप्टेंस आई नहीं है इस चीज को कोई लेकर। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब वो ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं है दीदी। होती हैं चीजें धीरे धीरे, जैसे जैसे अपनी स्थिति इंप्रूव होती है हम देख पाते हैं कि हमारे आसपास भी इसका असर जो है वो पड़ता ही है दीदी, है ना। स्थिति इंप्रूव होने में मतलब अभी 1-2 साल से ज्यादा लग जाता है। देखिए मैं भी इस जर्नी में रहा ही हूँ, और मैं भी देखूं, मेरा पहला परिचय शिविर 2014 में हुआ था। ओके, सो मतलब इफ आई लुक बैक, maybe after 1 or 2 years of my first परिचय शिविर, a lot improved in me, I cannot say that. ये समय के साथ साथ लगे रहे तो धीरे से लगा कि हाँ अपने में स्थिति इंप्रूव हो रही है। फिर अपने में स्थिति इंप्रूव होती है तो हम अपने आसपास भी स्थिति इंप्रूव कर पाते हैं। ऐसा हमने बड़ा क्लियरली देखा। जी भैया। ठीक है, गुड। तो आई भैया स्टार्ट विद देखो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। भैया आपने कुछ पूछा था, मैंने आपको मैसेज किया है। ओके, दिस इज द मोस्ट अनएक्सेप्टेड थिंग टू रिकॉग्नाइज एज समवन हु हैज नो क्लैरिटी। यस, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, यही मैंने पूछा था। बढ़िया, गुड। और बताएं, और भी कोई कुछ कह रहे थे बीच में? शैलेंद्र भाई आप थे हाँ क्या, ये कोई और था? हाँ, मैं भैया ये कह रहा था कि ये सवाल मेरे को काफी परेशान किया था। तो एक अच्छा। दिन सुनते सुनते बाबा जी का एक ऑडियो वीडियो मिला, उसमें लिखा था कि इस जागृति के होने के बाद कैलकुलेशन करेंगे कितना टाइम लगा, पहले क्या कैलकुलेशन करना। बिल्कुल ठीक है, तो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। हम ठीक दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि जितना हम ठीक दिशा में जा रहे हैं, जितना हम जागृति की ओर बढ़ रहे हैं, उतना हम अपने में एट पीस फील करते हैं, है ना। हम जितना डिस्टर्ब पहले रहते थे उतना अब नहीं रहते हैं। ये अपने में एक बड़ा सॉलिड फाउंडेशन बनता है। और बिल्कुल एक भैया। और यहाँ पर मेरे को एक और रिलेशन मिल जाता है एक बात से कि तो जैसे कोई जो टाइमिंग है वो किसी किसी के कंपैरिजन में होता है, अदरवाइज हर चीज मूविंग है अराउंड द वर्ल्ड यूनिवर्स में। तो टाइमिंग जैसे चीज जो है उसको थोड़ा सा किसी की सापेक्षता में समझ में आ रही है, ये बात है क्लियर आई। फिर यहाँ पर अपने आप ही पता नहीं क्यों ऐसा मन मानने को हुआ कि जीवन का अमृत तो यहीं पर डिसाइड हो रहा है मेरे से कि ये कंटिन्यू है। बिल्कुल। मतलब इसमें अगर मैं टाइम डालूंगा तो वो कंटिन्यूटी में नहीं आ रहा है। फिर वो मतलब कितना समय हो गया है जीवन बन के, तो ऐसा मैं कुछ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर पहले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। So I asked a question that the desire to authenticate that we are wise, ये वाली हम लोग अपने आसपास भी देख पाते हैं सब में। आर वी एबल टू वेरीफाई इट इन द पीपल अराउंड अस एंड इन ourselves also? This was the question. So if anyone has any sharing on this, we can take it. Okay, okay, okay. So we can ponder over it later on also. आगे बढ़ते हैं, we have around 20-25 minutes. So समझदारी का स्वरूप अपने आप में सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन और जीवन ज्ञान का संयुक्त रूप है। अंडरस्टैंडिंग इन इटसेल्फ इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ द नॉलेज ऑफ फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस एंड नॉलेज ऑफ जीवन। तो समझदारी की बात हो रही है और हर आदमी समझदारी का प्रमाण देना चाहता है। तो समझदारी क्या है? समझदारी अपने आप में सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन और जीवन ज्ञान, ठीक है, इन दोनों का संयुक्त रूप है। तो अंडरस्टैंडिंग इन इटसेल्फ इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ द नॉलेज ऑफ फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस, है ना। अस्तित्व दर्शन को फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस कह रहे हैं, एंड नॉलेज ऑफ जीवन। तो हमारी ये क्लियरिटी कि मैं केवल शरीर नहीं, द क्लियरिटी दैट आई एम नॉट ओनली द बॉडी बट आई एम कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉडी एंड जीवन, एंड देन व्हाट इज जीवन, दिस नॉलेज, एंड what is the existence, that knowledge, combined form of these two, this is understanding.
I understand the existence, I understand Jivan, then we can say I have understood. I have reached a stage of understanding. अस्तित्व होने के रूप में वैभव है. Existence in the form of being is continuous. पुनः नित्य वर्तमान है. And it is eternally present. दूसरी भाषा में होने की निरंतरता ही वर्तमान है. In other words, present is indeed the continuity of being. हर परिणाम, परिवर्तन, विकास और जागृति के उपरांत भी यथास्थितियां बनी रहती हैं. यथास्थितियां होने का साक्षी है. दोबारा से पढ़ता हूं. हर परिणाम, परिवर्तन, विकास और जागृति के उपरांत भी यथास्थितियां बनी ही रहती हैं. यथास्थितियां होने का साक्षी है. ठीक है. यहाँ पर जो है मतलब ऐसा पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है हिंदी में, तो मैंने इंग्लिश में ना यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगा दिया है, विच एक्चुअली मीन्स कि यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया है इस जगह पर. हर परिणाम, परिवर्तन, विकास और जागृति के उपरांत भी यथास्थितियां बनी ही रहती है. ये एक सेंटेंस हो गया. फिर यथास्थितियां होने का साक्षी है, ये दूसरा सेंटेंस हो गया. इवन आफ्टर एवरी रिजल्ट, change, development and awakening, existential states continue to be present. Existential states are the proof of being. Okay, so we see a lot of change around us. Okay, so in spite of all that change, the existence remains as it is. Okay. So I live in a city. When I was born 60 years ago, the city was in a certain form. Today it is in a certain form. Okay, but in spite of those changes, city remains. Okay, so वर्तमान में जब हम देखते हैं तो धरती पर 4 अवस्थाएं हैं. वो 4, there are 4 orders on this earth. Okay, those four orders remain as it is. In those 4 orders, there are various what I will say units. For example, different species exist in animal kind and in plant world also. Okay, they remain as it is. At the level of units, there are changes. Maybe a plant may be small today, it may grow up after some time, and it may perish after some time. But then there will be another plant. So plants will remain. Okay, plant order will remain. There will be changes at the level of units, but यथास्थितियां बनी रहेंगी. वही नित्य वर्तमान है, इसको कह रहे हैं. जागृति के Even बाद after every result. हाँ, दोबारा क्या बोले दीदी? जागृति के बाद भी यथास्थिति कैसे? जागृति के बाद भी ये 4 अवस्थाएं तो रहेंगी ही ना दीदी. रहेंगी कि नहीं जागृति रहेंगी? के बाद मतलब भ्रमित मानव भी रहेगा, फिर मानव का जागरण होगा, ऐसा? नहीं, तो देखिए इसको ना, ये भी एक कंफ्यूजन रहता है शुरू में, दैट आफ्टर अवेकनिंग will we have deluded humans or not. So the way I look at it is, दीदी, when awakened tradition will be there, जब जागृत परंपरा रहेगी तो क्या बच्चे पैदा होंगे कि नहीं होंगे? Will children be born or not? क्या आंसर आता है? हाँ, बच्चे तो पैदा होंगे ही. Children will be born. When a child is born, whether the child is awakened or unawakened, वो अवेकन हो जाएगा, मतलब वो शिक्षा विधि से हो जाएगा. शिक्षा विधि अगर से परंपरा होगा. बनती. हाँ, एग्जैक्टली. तो बच्चा जब पैदा होगा, when a child is born, even in awakened tradition also, it will need the education of awakening. उसका जो 15-20 साल है ना, 15-20 years of education. In that education, the objective or the goal is to make every child awakened. So the adults will be awakened. Most of the adults will be awakened. You know, we will still probably find that some people could not be awakened. They remain deluded. But at least in tradition, we will see that sufficient number of people are always awakened. That is the awakened tradition. तो यथास्थितियां रहेंगी. यथास्थितियां का मतलब ये है कि
भी जो अनअवेकन्ड है वो भी रहेंगे, खास तौर पे बच्चों के रूप में, इन दी फॉर्म ऑफ चिल्ड्रन। उनको हमें अवेकनिंग हर जनरेशन में ये वाला काम करना ही होगा। ये वाली चीज मेरे को, जब मैं इस पे एक्सप्लोर करता हूँ दीदी, मैं इसको ऐसे देखता हूँ। ठीक है भैया। इस प्रकार से यथास्थिति के उपरांत भी यथास्थितियां बनी ही रहती हैं। सो इवन आफ्टर एवरी रिजल्ट, चेंज, डेवलपमेंट, अवेकनिंग, existential states continue to be present. Existential states are the proof of being. यथास्थितियां ही होने का साक्षी है। इस प्रकार से यह भी हमें समझी है। In this manner, we also understand that everything in its fundamental form is indestructible. है ना, अविनाशी को लिखा indestructible। कितने भी परिवर्तन परिणाम हो जाए, in spite of numerous changes and results. इस विधि से संपूर्ण अस्तित्व का स्थिरता अपने आप स्पष्ट हो जाता है। Existence is clear, existence is steady, is clear on the basis of indestructibility. Nothing can be destroyed. When this becomes clear, then the steadiness of existence, अस्तित्व की स्थिरता जो है वो हमारे को स्पष्ट हो जाती। अविनाशिता के आधार पर अस्तित्व स्थिर होना स्पष्ट है। तो ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं, इसको एक छोटे सेंटेंस में कैप्चर कर लिया है। इस विधि से संपूर्ण अस्तित्व का स्थिरता अपने आप स्पष्ट हो जाता है। अविनाशता के आधार पर अस्तित्व स्थिर होना स्पष्ट है। Existence is steady, is clear on the basis of indestructibility. यही अस्तित्व सहज वैभव भी है। This indeed is the grandeur of existence. व्यापक वस्तु में संपूर्ण यथास्थितियों का वैभव ही अस्तित्व सहज वैभव है। Grandeur of all existential states in the omnipresent reality is the grandeur of existence. यथास्थितियों के आधार पर निश्चयता समझ में आती है। Certainty is understood on the basis of existential states. है ना, निश्चयता को certainty है। So I think we can finish this paragraph and then we'll wrap up today's session. दूसरे विधि से हर यथास्थिति का निश्चित आचरण है। Put another way, every existential state has a definite conduct. क्योंकि यह स्पष्ट हो गया है कि विकास क्रम अपने आप में एक कतार है, विकास अपने में एक स्थिति है, विकास क्रम में भी यथास्थितियां होना पाया जाता है। As it is clear that development progression is in itself is a queue, while development is a state in itself. Okay, so development progression is a queue, is a process, and then development is a milestone, it is a state in itself. विकास अपने में एक स्थिति है, विकास क्रम में भी यथास्थितियां होना पाया जाता है। Existential states are found in development progression too. तो ये अपने क्लियर हो गया। विकास अपने में जीवन पद के रूप में होना पाया जाता है। डेवलपमेंट इन इटसेल्फ इज इन द फॉर्म ऑफ जीवन प्लेन। तो ये जो है मध्यस्थ दर्शन में विकास क्रम और विकास, इसको हम इंग्लिश में कह रहे हैं डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोग्रेशन। तो विकास को बोला डेवलपमेंट और विकास क्रम को बोला डेवलपमेंट प्रोग्रेशन। तो विकास क्रम जो है, ऑल दी एटम्स, okay, which are in the periodic table, which have, a nucleus, and then they have first orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit, and further on. All this is development progression. Okay, ये एटम्स ही है जो कि इसी में सारे ट्रांजिशंस हो रहे हैं, सारे चेंजेस हो रहे हैं। In this process of all these changes and transitions in atoms, we reach a point where some atoms become जीवन एटम, जीवन परमाणु बन जाते हैं, उसको विकास कह रहे हैं। तो परमाणु में विकास जो है, ये एक पूरा का पूरा चैप्टर है, चैप्टर के फॉर्म में बाबा जी ने बताया है परमाणु में विकास। तो विकास क्रम में सारे परमाणु हैं, उनमें से
जब परमाणु विकसित हो जाता है, जड़ परमाणु ही विकसित होकर चैतन्य हुआ है, ये भाषा बाबा जी ने यूज की है। तो जीवन is also seen as in the form of an atom. Okay, it is irreversible. So once an atom becomes Jivan, it does not revert to a material atom. In that sense, Jivan atom is Amar. अब इसमें कोई चेंज नहीं, इसलिए इसको अमर कहा. Okay, it has become immortal now because there will not be any change in Jivan atom. This is the basis on which जीवन is being called immortal, है ना. जीवन का अमरत्व जो है, ये भाषा यूज करते हैं. तो जीवन is immortal because once जीवन atom takes its form, no change happens in the जीवन atom. So development in itself is in the form of जीवन plane, जीवन पद में. तो जो जीवन जो एटम्स हैं, वो जड़ एटम जो है, मटेरियल एटम्स, वो विकास क्रम में रहते हैं, उनमें चेंजेस होते रहते हैं. अस्तित्व सहज संयोग में उनमें से कुछ एटम जो है वो जीवन एटम में ट्रांजिशन कर जाते हैं, संक्रमण कर जाते हैं. संक्रमण कर जाते हैं मतलब उसके बाद में दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल. तो अब जीवन एटम में कोई चेंज नहीं होगा. दिस इज द फॉर्म, दिस इज द बेसिस ऑफ इमॉर्टैलिटी ऑफ जीवन. जीवन पद में निश्चित आचरण, अक्षय बल, अक्षय शक्ति विद्यमान है. ऐसे अक्षय शक्ति, अक्षय बल का वैभव जागृति के क्रम में भास होता है, और जागृति उपरांत वैभव का निश्चयन और प्रयोजन प्रक्रिया भी स्पष्ट हो जाता है. Inexhaustible strength and inexhaustible power is the definite conduct present in जीवन plane. ना, जीवन पद में ये अक्षय बल, अक्षय शक्ति जो है ना, इसका बल और शक्ति कभी खत्म नहीं होता है, कभी खर्च नहीं होता है. इसको कह रहे हैं inexhaustible strength, inexhaustible power. हम जितना भी सोच लें, हमारा सोचने की शक्ति कभी खत्म नहीं होती है, इसको कह रहे हैं. Impression, conception of the grandeur of inexhaustible strength and inexhaustible power is felt during awakening progression. जागृति क्रम में इसका भास होता है, हमें ऐसा फील होता है कि हाँ कुछ तो है अपने अंदर, लेकिन इसकी क्लैरिटी नहीं बनती है. And after awakening, the process of determination and purpose of his grandeur, of this grandeur होना चाहिए, not his grandeur, of this grandeur also becomes clear. तो जागृति क्रम में यानी भ्रमित अवस्था में भी ये कोई बड़ी चीज है ऐसा हमको फील होता है. This is something great that sense we get, although we do not have its clarity. And after awakening, we become clear about, absolutely clear about it, that what is this. इस आधार पर मानव को जागृति क्रम और जागृति रूप में आज की स्थिति में पहचानना बन गया है. जागृत मानव को स्वीकृत होना देखा जाता है, जागृति मानव को स्वीकृत होना देखा जाता है. On this basis, it has now become possible to recognize humans in awakening progression and in the state of awakening. So humans can be categorized in two categories. Either they are in awakening progression, that is, they have not reached the state of awakening. Second, they have reached the state of awakening. So it is seen that awakening is acceptable to humans. जागृति मानव को स्वीकृत होना देखा जाता है. It is seen that awakening is acceptable to humans. So it is acceptable. The only thing is why humans have so far unable to achieve it, because the exact knowledge of how to reach awakening, how to reach this stage, that was not available. Now what Babaji is proposing is, now that it is available, it can be in the form of human tradition also. One person has become awakened, which is Shri A. Nagraj. He has given what is the clarity of what is awakening. He has shown how to become awakened. He has
shown us the role of awakened humans, and now it is up to the our generation and future generations. And Babaji has said, I think directly and indirectly, that if this content is useful, then the awakened humans will multiply from generation to generation. And if this content is not useful, then this content will probably be lost by in the generations to come. Okay, so only our generation and future generations will actually be evidence of the power of this content of the and like whether this content is useful to the humankind or not. So awakening acceptable है humans को, इतना देखा गया है, और मानव जो है वो जागृति क्रम में और जागृति रूप में इन दो कैटेगरीज में. I think we can close here, and now next Friday, next will be 5th of March. So we will meet again. We wrap up today's session up to this point. If there is any sharing, any questions, any observations, any comments, we can do that now. Anyone? So, Sir, Hitesh Didi and Prabha Didi were talking about just. I'm sorry, I just got a call. So these were talking about that we do not feel that we will achieve it and like in our lifetime, and that always makes us feel guilty. And that I think that is a common question across everyone, that we would like to achieve it, and if I can contribute from my side, but we do not see it may happen. So obviously the same question has come to my mind, but I was watching something interesting and thought of sharing with the group. So I was just listening to some conversations on sustainability, and the person that from the YouTube, they have put together the life cycle of the Earth. So if the Earth has seen 1 billion years of life cycle, they have put down the events of the Earth in a 24 hours life cycle, 24 hours cycle. So assume Earth was born on 12 a.m. and then we are currently at 12 p.m. So what all things have happened and how old human history is, like when we have come on Earth. So it is so surprising to see that we are just 7 seconds old in the whole history of the Earth. So we are just 7 seconds old, and we are going to see a lot many things, and a lot many things will happen. So I think that helped me at least put the things in perspective. That I think, yeah, we need to, I think, see not from our angle, but I think the perspective needs to be more broadened. And yes, I think the things will become more clearer with that. So just a point of view. Yeah, that's very interesting. The way I actually have also seen that video. I mean, I think it has been in circulation for quite some time, and I think that all of us, we have in different internal states. Some of us can see ourselves as, sort of, at somewhere in the whole human journey in the history of humankind, we have a role. But for some of us, it is difficult to see that. I mean, we are sort of, too much confined by, we have our role in the family, and, like we see ourselves between birth and death only, between those 60, 70, 80, 90 years when we are on this earth. But how can we look at this whole aspect even from that perspective also? When I was thinking about that, I think it's important to see that we do a lot of things in which we do not get happiness, but we get happiness out of the fact that the efforts which we are making today will make our children happy. I see a lot of people striving very hard, working very hard, so that their children can go to good schools and colleges, their children get good jobs, so that the children will become happy. And the parents think that we will become happy just by the fact of seeing our children happy.
Okay, this assurance itself is very soothing, is very satisfying. Yeah. So yeah. the same, I think, is true for wisdom also. When we take a few steps towards wisdom, towards understanding, towards knowledge, और क्वेश्चन ये उठता ही है कि पता नहीं ये इससे हमारे जीते जी कुछ होगा कि नहीं होगा. लेकिन इवन इन स्पाइट ऑफ इन अवर लाइफ टाइम we may not be able to see some very big results, but this is the direction to pursue. And if we can show this direction to our children, and our children will of course be living longer than us, and then their children will also be there. ओके, सो अगर फैमिली के लेवल पे ही अपने को भी देख पाते हैं तो भी हम काफी सारे फिजिकल असेट्स एंड काफी सारे फाइनेंसेस इकट्ठे करते हैं ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स जो है वो अच्छे से जी पाए. तो उस सेंस में देखने से भी हमारी आने वाली जनरेशन्स को, हमारे चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन जो है, उनको नॉलेज से भी मदद मिलेगी. ये भी एक एस्पेक्ट देख पाना जो है ना, मेरे को लगता है कि ये भी अपने आप पे, जहां पर लगे कि भाई इससे तर्क संतुष्ट होता है, इससे अपने में आता है, तो ऐसे भी देखने में कोई हर्ज नहीं. Important it is, sir. Yes, agree. Like what we are doing for them and passing it on, at least we see that happiness coming in some form and fashion. हम अपने बच्चों के लिए करते ही है, जिसको हम कई बार सैक्रिफाइस भी कहते हैं ना. बच्चों के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है कोई, है ना, तो उसका रिजल्ट खुद नहीं लेगा. सैक्रिफाइस का मतलब ही ये है कि रिजल्ट मेरे को नहीं मिल रहा, मेरे बच्चे को मिल रहा है. तो यहाँ तो, लेकिन उससे भी संतुष्टि तो मिलती है, वो भाव सब अपने में देख सकते हैं. तो जिसकी जैसी स्थिति हो भी है, उस हिसाब से अपने में जैसे भी तर्क लगा के ऐसा लगे कि हाँ, ये इस रास्ते पे बढ़ने से चीजें अच्छी होंगी, सबके लिए होंगी, वो एक बड़ी चीज है ना. सबके लिए नहीं होगी, परिवार में ही हो जाएगी, ये भी कम नहीं है. ऐसे ही मान के कर लिया जाए तो भी ठीक. Exactly, sir. जी भैया, थैंक यू. ठीक है. Good. Thanks for joining. So we wrap up today's session and see you again on next Sunday. Namaste. Thank you. Have a nice day. Thank you. Thanks. Namaste. Thank you. Namaste. Namaste.